कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों अनजान पल सजे भी न मेरे नैनों में, टूटे रे हाय रे सपनों के महल। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों। So everybody, welcome to our human library. It's our 5th session, and it's been a wonderful journey where people come in as books and they tell us some inspirational things about themselves, about their loved ones, and the others who are the listeners or the readers of the books sit there and absorb what the book is trying to tell them. It's been a wonderful journey last entire year, and before that we've had so many sessions, and it's really made a difference to the lives of others. Remember, when you're a book, it's something that you share which is so personal. We've had sessions on kind of relationships, on identity crisis that we go through when we are, younger. We've had sessions where we've spoken about love and death and so many different kinds of emotions that we go through. But today, our books are going to talk about their loved ones, their specific loved one who has left a mark on their lives, and how that loved one's life has been so inspirational for them that they want to share their story. So it's really like a storytelling session. So we have these amazing 7 breakout rooms today, and we're going to get them to go into every breakout room, and there are going to be readers who are going to go into the rooms and listen to our books. So I'm going to open all the breakout rooms books. Please enter those breakout rooms, and I'm going to assign people to go to every breakout room. Are we ready? Yes, ma'am. Okay, so here the rooms are open now. And going to your breakout rooms, I'm going to be assigning readers. So hold on. And everybody, wherever you're assigned, please go there to listen to your books. Okay, so everybody is back. Let's have some feedback first from the readers, the ones who were listening. Anybody would like to go? Let's go with any of the rooms. Room number 1. I'd like to say something from room number 4, where Ranika was the book. I know her journey. I know her through the poems, through the healing works. And
today I felt that she really had healed herself from that loss. And it's not actually a kind of loss, it's a kind of, that sublime, that always known a kind of transition, as she has narrated it. That's why I feel ki she really has healed herself from whatever void was there in her heart. And today, while she was narrating, I was feeling that yes, there is a kind of glow, and that glow actually is coming out of this realization that um, physical this limitation that is not going to restrict that love, that connection, and she is really ascending above that. So I'm really feeling quite proud for her. So yeah, all the best to Ranika. And it's a nice way of giving tribute to our loved ones. So thank you, Ma, for giving me this opportunity to see her journey in this way. Thank you so much. Amita, go ahead, beta. You want to say something? Amita? Amita, you want to speak? Yes, Amita, go ahead. Yes. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. As ma'am and maybe a few members might be knowing, my only child, my son Rutuj, who was 21 years old, he passed away 3 years back. After that, जैसे रानिका जी ने बोला है, वैसे ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, so I can also realize that. And the one thing I can agree is that grieving छोड़ के I remember him very fondly. उसके बारे में जो भी मतलब 21 years का जो भी उसका लाइफ था, तो he lived it fully और उसने एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है to other people how life should be. तो उसके नाम से उसके कॉलेज ने उसके यूनिवर्सिटी में, he was in the US, they have installed a plaque, they have started a scholarship in his name. तो I really celebrate his life कि मैं सबको एकदम फॉन्डली उसके बारे में बताती हूँ कि आई एम सो प्राउड अ मदर. और मुझे और एक रियलाइजेशन है कि आप जैसे मेरे जब भी व्हेन ही वाज अलाइव, उससे ज्यादा मेरा अभी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है उसके साथ. मतलब मेरे मन में मैम इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, आई कैन नॉट टेल हियर, बट वो सब मुझे इतना रियलाइज होता है. मतलब कोई भी बात मेरे मन में आती है ना, ऐसे विश, तो ही फुलफिल्स इट. वो मुझे एक अलग लेवल पे समझ में आता है. मतलब एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि उसका ग्रेजुएशन, मतलब आफ्टर ही पास्ड अवे ही गॉट डिग्रीज. तो मेरे मन में ऐसे बहुत इच्छा थी कि मुझे उसको वो ग्रेजुएशन कैप में देखना था. और वो बात उसके कॉन्वोकेशन के टाइम मेरे मन में आई. एंड यू ऑल पीपल वोंट बिलीव, मेरी एक ननन है, उसने उसका ऐसा वीडियो बनाया और शी पोस्टेड इट विदाउट टेलिंग मी. मतलब जो भी बात मेरे मन में आई ना, वो फुलफिल हो जाती है. और अभी 6 महीने पहले भी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी जो है वो पीएचडी परस्यू कर रही थी. तो ऋतुज ऑल्सो वांटेड टू डू पीएचडी. तो मुझे थोड़ा ऐसा एक हार्ट एक हुआ कि अरे ही वुड ऑल्सो हैव गॉट. तो आई क्राइड फॉर 5 minutes वगैरह ऐसे कुछ तो होगा. और नेक्स्ट डे ऐसे मुझे मन में आया कि वो जो ग्रेजुएशन कैप वाला फोटो है, अगर मुझे आएगा क्या. एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर एक गूगल फोटोज में सब मेमोरीज आई और उसमें वो फोटो आया मुझे. करेक्ट. तो उसके बाद अभी 15 दिन पहले उसकी एक वेरी डियर फ्रेंड, शी विजिटेड अस, तो वो विजिट करने वाली थी. तो उस दिन मेमोरीज टुगेदर करके उसका एल्बम आया. लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था. उसका जो वेरी डियर फ्रेंड यूएस से हमको विजिट करने का आया था, तो उनका दोनों का मेमोरीज टुगेदर. और ऐसे कई बार होता है. तो आई हैव दैट विश्वास है मेरे कि स्टिल ही इज विथ मी. बहुत सारे ऐसे मैटर्स है. तो मैं भी अभी उसका लाइफ जो है आई सेलिब्रेट इट. लवली. और मैं रो के बात नहीं करती, खुशी से मेरे बेटे के बारे में अच्छी बातें सबको बताती हूँ. Wonderful. Amita, I love you, beta. I think you're Love you, doing ma'am. really well. Really, Yes. really well. I'm कितनी Yes, खुश हो
कि तुम यहाँ आई हो आज ह्यूमन Yes, लाइब्रेरी में. आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी दैट यू आर हियर. मुझे thank पता है you. तुम्हारी जर्नी कैसी है, क्या है, Yes, बट तुम आज यहाँ इतनी सारी बातें कर रही हो और स्माइल करके कर रही हो ये बातें. ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, yes. और रियली. मुझे सबको बार बार बताना है कि ये कनेक्शन कहीं भी नहीं रुकता. इतने सारे एक्सपीरियंस आते हैं मुझे. मैं अभी यहाँ पे टाइम कम होगा मैं बोलूँ सो आई एम स्टॉपिंग, बट बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि ऋतुज मुझे मैसेज देता है एंड आई कैन डिकोड दैट. Lovely. So when our next session is there, Amita, we'll keep it on a subject like that. जो तुम Okay, messages के बारे में बात कर सकती हो. श्योर कि श्योर. मैं messages आ एक रहे बार हैं, है पूरा ना? प्रिपेयर करके आऊंगी. ठीक है. थैंक्स अ लॉट माँ, ये सब आपकी वजह से ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. थैंक्स अ लॉट. आई एंड लव यू रानी, बच्चा. थैंक्स अ लॉट. आपने भी मुझे बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया आज. Wonderful, wonderful, Amita. थैंक्स अ Uh, लॉट. okay, बच्चा. Pallavi, you want to say something? Please go ahead. यस मैम, मैं भी सेम नोट पे बोलना चाहूंगी कि मैम ये जो नॉलेज है वो आपके वजह से ही आया है. जैसे आई एम रियल सिस्टर ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ अमिता. Yeah. तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कई सारी चीजें बोलनी रह गई है, तो वैसे नहीं होता. ऋतुज जो है वो मीन्स अमिता को या मेरी मम्मी को वो सपनों के थ्रू या गूगल फोटोज के थ्रू मिलता ही रहता है. Yeah. और मैं थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पे हूँ, तो यू गाइज वोंट बिलीव, पर मुझे ना जो मैं भजन सुनती हूँ या जो कुछ सुनती हूँ ना, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है. मीन्स मैंने वो सेम लिंक अमिता को भी भेजी कि सुनने के लिए, ताई सुनो इसमें ना ऋतुज की आवाज आती है. तो शी सेड नहीं, मुझे उसमें नहीं आती. पर उस दिन से लेके आज तक मुझे उसमें ऋतुज की ही आवाज सुनाई देती है. उसके बदले एक ऐसा फोटो है जिसमें एक बच्चा है, टीनेजर, जो अपने गुरु को प्रणाम करता है और पीछे से वो फोटो है. तो मुझे वो फोटो हमेशा ऋतुज की ही बैक साइड से ली हुई फोटो जैसी लगती है. That's right. या जब भी मैं सोचती हूँ ऋतुज के बारे में, तो वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है. जैसे अभी मेरी बेटी यूएस में पढ़ रही है, तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर ऋतुज होता था ना, तो बहुत टेक केयर करता था उसकी. हाँ. तो वो जब उसके आंट और अंकल के घर पे गई, तो उनके स्मार्ट टीवी पे इशिता और ऋतुज का फोटो आया गूगल मेमोरीज में. मीन्स मैम, देखने के लिए कोई भी, मीन्स नो बडी विल बिलीव इट. No, Nobody we are will all believe here it. to believe it. Don't worry. Exactly. We all So मुझे believe ऐसे this. लगा कि ऋतुज को पता होगा क्या कि ईशु गई है शिकागो, वो भी जाता था, आज दोनों होते थे तो कितना. मीन्स आई वाज मिसिंग ना कि ऋतुज होना चाहिए था. तो उसने अपना प्रेजेंस दिखाया. और वो मुझे भी नहीं पता चला कि ऋतुज के आंट ने मुझे बोलते बोलते ऐसे ही बता दिया कि पल्लवी पता है आज ना ऋतुज और ईशिता का फोटो हमारे स्मार्ट टीवी पे आया था गूगल फोटो से. पता नहीं कैसे ऋतुज के Yes. 4th या 6th बिल्कुल. बर्थडे का. Right, तो Pallavi. दिस इज Thank व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन. आप सच में विश्वास रखिए, Yes. सोल ही सब कुछ है. हम शायद वो बॉडी के लिए रोते हैं, बट वो कुछ भी नहीं है. वी आर एक्सपीरियंसिंग इट. Absolutely. के सोल का कनेक्शन बहुत ऊपर की लेवल पे, जो माँ ही हमें समझा सकती है. नहीं नहीं, very nice, Pallavi. Thank थैंक you. यू एवरीवन. थैंक यू. प्राची, go ahead बेटा. आप which room were you in, प्राची? कौन से कमरे में थी? I was in Ranika's room, Okay. and Ranika is like a very close friend. Okay. So there was like in the start there was a lot of confusion since childhood. I used to feel a lot of things. I could see a lot of things. Then Ranika said that this is not untrue. This is all true what you're feeling. And then she guided me to a lot of things, and it opened up a completely new world for me. Yeah. So like you start trusting your instincts, which the whole world says कि it is nothing, it's just भ्रम है दिमाग का. So then it gets a lot of faith, and then you actually start seeing, hearing, feeling, understanding what is what is not. So that is like a wonderful experience. I completely experienced everything whatever Anika said. Together, both of us together, we were feeling everything, and it was wonderful. The journey was like
has been excellent till now, and I'm sure it'll be wonderful even further. Absolutely, absolutely, my dear. When you yourself can go beyond the five senses. And you Absolutely. yourself can go beyond the physical limitation that you have imposed. Correct? Right, That is right. how beautiful it is. Yes, Pankaj, go ahead. Thank you, आप Ranika. ओके बच्चा, आप कौन से रूम में थे पंकज जी? मैं इन्हीं के साथ, अमिताभ और इनके साथ ही था, ओके, राधिका के साथ ही था। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है डॉग की, my father also passed away and I met you when I Yeah. that story. या इन्होंने कहा है बट बहुत मुश्किल होता है. I think हाँ जी, it is important for you to find somebody who can help you heal. That is one. और दूसरा है कि अगर आप रोते रहोगे तो आपके आसपास की दुनिया भी रोती हुई ही बनेगी, क्योंकि लोग आपको रोता हुआ देखते हैं. Those memories are not good. सही But है, if you smile by remembering the good things about the person who has passed away, या it will lift you up and improve the environment around you. And that's exactly what we should be doing. वंडरफुल पंकज जी, एब्सोल्युटली राइट. जब जब कोई हमारा अपना चला जाता है ना, तब ये ज्ञान सडनली हमें आता है. इसलिए बेहतर है कि कोई जाए उससे पहले भी प्रिपेयर आवरसेल्व्स. मैं हमेशा मानती हूँ कि कोई चला जाए उसके बाद प्रिपेयर करना मुश्किल होता है ना? बट इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई, we are all going to go one fine day, isn't it? And a new set of people will come. That's all. So we have to prepare ourselves with this understanding and knowledge that we are here for a short period of time. That's all. But ये short period of time कितना बढ़िया हो सकता है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का. हमारा पूरा अटेंशन उस पे जाना चाहिए, हाउ टू मेक दिस टाइम वंडरफुल, है ना? बस आप 20 साल जियो, आप 40 साल जियो या आप 90 साल जियो, अगर आप वो टाइम बेहतर नहीं बना सकते तो फिर वो जीवन व्यर्थ है. सो जितने भी साल जियो, इफ गॉड इज गिवन यू मोर इयर्स टू लिव, ग्रेट. इफ गॉड इज गिवन यू लेस इयर्स टू लिव, ऑल्सो ग्रेट. बिकॉज जैसे अमिता ने कहा कि 20 इयर्स की उम्र में बच्चे ने कितना कुछ कर दिया जो शायद हम 90 साल में नहीं कर पाएंगे. सो उसका तो जीवन 20 इयर्स का नहीं है, इट्स एक्चुअली ऑफ 90 इयर्स. सो ये जो हमारी धारणा है कि जीवन 20 साल का नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ वैल्यू ही हैज एडेड टू द लाइव्स ऑफ अदर्स इज लाइक इफ ही हैड लिव्ड फॉर 90 इयर्स. बिल्कुल. But he did everything quickly. बिल्कुल. हम लोग unnecessarily टाइम ले रहे हैं, है ना? 20 साल बीत गए, 40 साल भी बीत गए, तो we are taking more, we are slow actually. हम तो बड़े slow है, right? He was fast. He said, भैया तुम जियो 90 साल, मैं तो 20 साल की उम्र में सब कुछ करके निकल जाता हूँ. So वो निकल गया. That is why we have to celebrate every life. हर जिंदगी इतनी खूबसूरत है, कुछ न कुछ इंसान सिखा के जाएगा हमें. यस माय डियर खुशबू, कौन से रूम में थे? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इश्मीत था, आपको याद होगा, वो सिंगर था. हाँ जी, इश्मीत. बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे. और अभी आप जब बोल रहे थे तो मुझे मूवी का डायलॉग याद आ रहा था. हाँ. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी जरूरी नहीं है. दैट्स ट्रू. खुशबू कौन से रूम में थे आप? नमस्ते माँ, मैं 7 नंबर रूम में थी सुमन जी के साथ में. तो एक बात मैं कहना चाह रही थी माँ कि जब तक लास्ट मोमेंट पे आप जब रूम एलोकेट कर रहे थे तब तक भी मेरा मन कर रहा था कि मैं बोलूँ कि माँ आई वांट टू बी अ बुक, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी. मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाह रही थी, पर लगा कि शायद नहीं बोल पाऊंगी. और फिर मैं रूम में जाने के बाद में भी मन किया मैं लीव कर दूं और बोलूं आपको कि एटलीस्ट, और अगर आपने सब लोग एलोकेट किए होंगे तो आप ही सुन ले मेरे को. पर फिर भी हिम्मत नहीं हुई. और जब उन्होंने शुरू किया तो ऐसा लगा ये तो वही सब कह रही है मैं कहना चाह रही थी. बिल्कुल वही स्टोरी चल रही थी कि मेरे पापा के चाइल्डहुड में भी उनके पेरेंट्स नहीं थे, उनका स्ट्रगल, उन्होंने बाद में जो मम्मी के साथ में चीजें रही और वो सब, तो ऐसा लगा था ये तो मेरी स्टोरी चल रही है. तो मुझे लगा यूनिवर्स किस तरह से कई बार कि आपको अगर शब्द नहीं मिल रहे, कहना नहीं आ रहा है या आप नहीं सहज हो रहे, तो किसी और के थ्रू भी रिलीज करवा देता है. मैं पूरे एंटायर टाइम अपना वीडियो ऑफ रखा और मैं सुनती रही और मेरे आंसू जा बह रहे थे कि ये सब कुछ जैसे कुछ नाम बदल के अलावा बाकी सब कुछ वही चल रहा था. और
अभी जब मेरे स्टार्ट होने से पहले जो आप कह रही थी वही बात एक मैंने मतलब रियलाइज की इतने टाइम में पापा के जाने के बाद स्पेशली, कि जाने के बाद हम उनको वैल्यू करते हैं, उनकी चीजें करते हैं, उसकी बजाय हम अगर जीते जी कर ले तो उनकी और हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। जो भी हमारे आसपास है, हमारे फैमिली, हमारे लव और फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, बट अगर हम समझ लें कि सबके साथ में हमारे मतलब कुछ ना कुछ लेसन है, लर्निंग्स हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, और हम उनके कहते हैं ना जूते में पैर रख करके पाए, तो बहुत हम सुंदर ये जिंदगी को जी सकते हैं। जैसे कि अभी हम ऋतुज की कह रहे थे बात की, उसने कम टाइम में जिंदगी अच्छी जी और हम बस नंबर्स में चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज इतने टाइम के बाद समझ आई। थैंक यू सो मच फॉर द बुक, एंड थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस प्लेटफॉर्म। ब्यूटीफुल। थैंक यू माँ। आई थिंक खुशबू ने खुशबू बहुत खुशबू ब्यूटीफुल बात कही है ना, हाँ मैम, कि मैं तो खुशबू कुछ बोलना चाहती है अपने फादर के बारे में, बोल नहीं पा रही, और वो उसी कमरे में गई जहां पे जो बुक है वो वही चीज बोल रही है जो खुशबू बोलना चाहती है। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। हाँ, और आप अब मैं इसके आगे लिख सकती हूँ डिट्टो। मुझे तो कमेंट ही नहीं बोलना आ रहा था, खुशबू को कमेंट बोलना तो आया, एंड आई वुड जस्ट से डिट्टो, क्योंकि मैं सुब्बी जी के रूम में गई, उन्होंने भी हाँ अपनी कहानी सुनाई, हाँ पूरा नहीं लेकिन कुछ हाँ, तो रिलेट करते हैं, ऐसे ही हम किसी रूम में नहीं चले जाते। लवली, वेरी और नाइस, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत कुछ अपना बहुत अच्छे से शेयर करा, बहुत जो बढ़िया। इंस्पिरेशनल है। नेक्स्ट सौम्या, आप कौन से रूम में थी? So I was with, thank you Trupti ji for letting us come. Thank you Ranika. And I was with Suman ji in हाँ room number 7. So हाँ I was a little disappointed because I thought, what am I going to do? It's the first time, but everything, it was a play. So हाँ 7 number, name of the father was Durga Prasad. So Durga came into the picture. And then I was listening to a story. I had a very lovely um, relationship with my father. He was my best friend. It was my mother's passing, which was very difficult for me. And it's just been 2 months that Ranika finally made me sit in a place and accept, because she got throat cancer and she's had lots of operations, but she was never sick. And she got throat cancer just like that, as if she had manifested it. And I couldn't understand why. She didn't get any symptoms which cancer patients get. She had 3 months of galloping cancer spreading rapidly, and no pain, nothing. So exactly at 3:15 in the afternoon, she would get pain for 15 minutes, and that was it. Which is, and I felt very helpless. The night before she died, 4 hours before, she told me one thing: I want you to be happy. I want you to do everything which you have to do, because at this minute, when I know I'm going to die, I realize I wasted a lot of my time. And so I said, no, you're not going to die. I'm not going to let you die. And then I knew she was going to die. So I went to pick up my father, who was 80 years old then. And as I stepped out, she passed away. So when they gave me a call, I was mad at her because my best friend had ditched me. I was really, really mad. I was really, really mad. And so I got him, and I dressed her for her last, right. but it was dressing up my best friend. So I realized why the throat cancer today, and I understand. And I really, really respect her, not only as my mother, for being a wonderful soul. And I also realized I am not supposed to do the same mistake. So I have to thank you for letting us in. I have to thank Ranika, who doesn't give up on me, because I'm quite like the dog's tail, which is really, really curved. But if I have learned one thing from them, is never to give up. So I may fall 1,000 times, but I cannot give up. So I thank each and everyone here for having us here. Thank you, Sumanji, and may your healing, you have to give yourself time, and you're among the right people. It took me 16 years. So it's a journey. So thank you so much, everybody.
Sumanji, Soumya. Trupti ji, and Ranika. Thank you, Bacha, for sharing with us. Bijal, please go ahead. Ma'am, I think it's a little not related to this, but I am not part of this group. I'm very new here, as you know, Yeah. maybe a month old. Yeah. So I'm having these fears, about losing people. I've not really faced it. But in Uri's story, it was, like, okay, matlab, this thing is going to happen, and somewhere I'm not prepared. So Bijal, we are never going to be prepared for death. We are never going to be prepared to lose somebody who was dear to us, or whom we love so much. We are not prepared, right? That is why we have to prepare ourselves. This whole life is only about preparing for death, let me tell you. how do you do that? It's not only death of a person, it's death of an idea, death of Relationship, youth, yeah. death of workspace, death of losing a job and moving to another. Death is not only physical. Yeah. The moment you realize that death is not only limited to a physical body, but then you realize that you're dying every single day. Something or the other is going away, right? Your age is decreasing. Maybe your finances, there's a death as far as finances go sometimes, right? Go completely rock bottom, and then you again climb up. So there is death is nothing but transformation. Right? You lose a job and then you take another job. Yeah, you discard a piece of clothing and then you buy another piece of clothing. Right? You have black hair when you are young and then you transform to having gray. So there is a constant transformation that is taking place. Now we are okay with all these losses. Yeah. But we are not okay with losing a person. Why? Because that person is fulfilling some need in you. Okay. Yeah. That is why we don't want that person. There's nothing wrong with that person. Actually, something's wrong with me, right? I'm wanting that person to go, but the person goes away, who's going to hug me, who's going to say nice things to me, who's going to cook for me, who's going to sit kind of by my side when I'm sick, right? It's all about me. So that is why the more you become self-absorbed, not absorbed in the wrong way, but self-absorbed as a person who's here to grow, then you will seek your own private journey, your own independent journey, where all these people are like these beautiful blooming flowers where autumn is going to come. And even through autumn, you can walk through some beautiful flowers and trees, which are shedding their color and changing their shape, right? So nature is teaching you about death and about life, both. You're a writer. So I'm a writer, but I have this thing where I don't want to, this it's not face some realities in life, and I'm been an escapist for a So you need to write about death. Oh what my is God. death? Actually, yes. Because if you face your fear while writing, you never know how you'll be able to get out of that fear. When you pour things on paper, something changes inside you. Some realization starts coming. True. So death is a beautiful thing to celebrate. It's nothing to worry about. Because if you keep worrying about it, then it's not going to change. It's nature. True. Very true. Very true. मृत्यु का भी अपना एक स्वभाव है. जी. तो वो स्वभाव तो नहीं बदलेगा. नहीं, बिल्कुल. Why grieve? Instead of that, celebrate. And while you are living, celebrate every day. Make every day better with that person that you love the most. True. And with all people that you love the most. Yes. Thank you. I hate the statement that people say that I don't have time. सबसे बुरा statement है जिंदगी. मैं भी बोलती हूँ मैम. When you say I don't have time, that means you're dead. If you don't have time, right? So you should take out time for everything and anything which gives you joy. Yeah. So that's what I believe. I celebrate every person that is here and everything that we do. I think that मैम इस पे एक थोड़ा elaborate session जरूर करिए. आपको सुनने में थोड़ा हम भी सीख जाएं, ऐसा हो. Thank you, Ma. Thank you so much. And thank you, Urvi, for sharing of your life. Thank you. Urvi's group. Lovely. Very nice. We had such beautiful books today. Each one of them is like a poet, let me tell you.
चाहे वो उर्वी हो, चाहे रानिका हो, चाहे सुबी हो, they are all poets. Suman, everybody, okay, because they are living a joyous life, not thinking of loss. Yes, yes. And that's the most beautiful part of all my books today. So thank you, my books today. Had Suman, and then Ranika and Elizabeth. Zora, I'm sorry you came in late, so I couldn't put you into a room, but I'm sure you also got something there. Urvi, Akash, of course, my wonderful Akash, Subi, and Nanda. Thank you so, so, so much for being books, because putting yourself out there is difficult, but you are making a difference to the lives of others. And I think that's what's most important. So thank you all books and all the readers who've been here. We've had a super, so many of you have joined in, nearly 50 people. I think that's awesome. So we'll Thank you, pick up ma'am. our next human library soon in 3-4 months' time. And thank you for always encouraging me to continue. Thank you, ma'am. what I do. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank